आज का जो जनरेशन है ना वो बिजनेस बिल्ड करता है बेचने के लिए. You are a first generation entrepreneur. I would love to know, how did you start this? Start was a difficult thing for us because we don't have any banking background. Don't plan too much when taking initiatives. Time will tell you that where you have to move on further. Let's start and let's process get evolved. That's a very similar concept that we try to tell business owners as well. That break down your process into a lot of atomic parts. Atomic means small. And plan for small things, execute them faster, and then move on further. We are a street smart company. We don't know anything and we know now everything. Do you have a technical background? No, nothing. So how did you even imagine? Technical कोई ज़्यादा बोलता है तो नींद आ जाती है. You guys were so much early in the market with RuConnect app, which was digitizing the loan process entirely. What inspired you to start this? We are the first one, those who have started integration with Piramal and doing secured business end to end. What's one initiative at RuLoans that you are extremely proud of? ये एपिसोड स्पेशली वो इंडियंस के लिए है जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं, जिनको कैपिटल की जरूरत होती है टू मेक इट बिग. We have invited Mr. Kaushik Mehta, the founder of RuLoans. They help you gain access to capital very easily with a completely seamless digital process. In this podcast, we got to learn that how Mr. Kaushik has launched so many tech solutions very fast. And he strongly believes in launching fast and not planning too much into the future. Plan small, plan quick, and also keep a stop loss to ensure that you're not losing a lot of money. But launch a lot more. Secondly, we also understood that how seamless is it for a normal person to apply for a loan through his RuConnect app. And finally, we also understood how exactly is a bank selected to give you the right loan for your right use case. And that's all the things that RuLoans solves for. Do you want to know how a non-technical founder scaled up his business to new heights using technology? This is the podcast for you. Also, we are calling all entrepreneurs who want to understand how to use processes to scale up their operations and take their business to the next level. Subscribe now to Atomic Processes podcast. Enjoy the show. Great. So, thank you so much for coming here, Mr. Kaushik Mehta. Thank you. We would actually start with a rapid fire so that we are in the rhythm. So, I'm going to ask you certain questions. Whatever comes to your mind first, you can answer. Okay. So, what's the first word that comes to your mind when you think about RuLoans? Obviously, loans. Great answer. How would you describe your journey of launching the RuConnect app in just one word? It's game changer for us. Excellent. I believe so too. If in your entire day, whatever you're doing, if you could automate one thing, what would that be? To make my payment process automatically. Perfect. Great. That's something that maybe we can help you out with eventually. Great. What's your team's favorite thing about working at RuLoans? Coordination and cooperation. That is a great value to live by. And what's one initiative at RuLoans that you are extremely proud of? We shared our wealth with our people. Excellent. So I think we are done with the rapid fire. And now I would really love to know more about the story of RuLoans. So you are a first generation entrepreneur. I would love to know, how did you start this? Start was a difficult thing for us because we don't have any banking background. We came from a different background where banking was not a part of anywhere in our life. So we got Mr. Rahul Verma. We know him because we were selling databases to him in 1996-97. And he has given this idea that why don't you sell credit card for us? From there we got this idea that we should start selling credit cards. So from there we have started the DSA business. Excellent. So without any background, what does it take for you to understand the industry and go about setting up everything the way you have set up now? So how was the initial few years? So I would say we are a street smart company. We don't know anything and we know now everything. Wow. So we learned from our experiences and as and when we हम गिरे भी बहुत है, खड़े भी हुए, सीखे भी बहुत है और आगे भी बढ़े. तो we are like a street smart company. जो आता है वो करते रहते हैं and we implement things faster. If we learn something,
So we adopt and we implement things faster. But I don't say that हम लोग straight line में आगे बढ़े. अब जितने ऊपर गए उतने नीचे आए और ऊपर आगे बढ़ते गए. But हाँ, डरे नहीं है और आगे बढ़ते रहे. And that is what the result today, what we are seeing is that we are growing very well. Great. So now my question over here, which is actually intriguing me, do you have a technical background? No, nothing. So how did you even मैं तो imagine? टेक्निकल कोई ज्यादा बोलता है तो नींद आ जाती है. So how exactly did you decide कि ये सब digitally, एक तो first is understanding this is possible. Second is getting it done, because not being a technical founder. So I have a good gentleman called Mr. Balkrishna Sharma. उन्होंने ये पूरा डेवलप किया हमारे लिए और ये पूरा दिमाग उनका था. मैंने उनको पूरा फ्री हैंड दिया. And then he started doing all this. But with that also, I think there is a lot of time investment that the founder needs to do. There's a money investment that you need to do. So what inspired you? Like why did you decide कि ये करना चाहिए? देख भाई, टेक्नोलॉजी करना चाहिए वो मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ. मैं पिछले 15 साल से बोल रहा हूँ. Okay. टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है वो मैं 15 साल से बोल रहा हूँ कि समझ नहीं है और आज भी यही बोल रहा हूँ कि समझ नहीं है. लेकिन टेक्नोलॉजी अनेबल्स फॉर स्मूथ प्रोसेसिंग. करेक्ट. और मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी, जो लोग बोलते हैं हम लोग फिनटेक है, अगर आप अंदर जाके देखोगे तो फिनटेक नहीं है. वो फिजिकली पूरा काम करते हैं और अपने आप को फिनटेक बताते हैं. टॉप टू बॉटम तो कोई फिनटेक कर नहीं सकता. इंडिया में तो नहीं कर सकता. अभी बाहर की मुझे नहीं पता है, बट इंडिया में नहीं कर सकता. सो दैट वे अगर आप देखने जाओगे तो प्रोसेस बहुत स्मूथ बने हैं. और आई रियली थैंक टू माई टीम, दोज हु आर डूइंग दिस जॉब. नोवा स्टॉक करके कंपनी है, उन्होंने ये पूरा बनाया है. सो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. और हमने जो बनाया है, हमने किसी के प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाया है. राइट. हमने हमारा ओन्ड बनाया है. Right. मतलब हमारी खुद की प्रोप्राइटरी है इस पे. एंड वी हैव नेवर मेड इट एनीथिंग ऑन द समबडीज प्लेटफॉर्म. Got it. We spend lot of money. अभी तक हम लोग करीब 8 या 10 करोड़ रुपया डाल चुके for building up this technology. Monetarily कोई सक्सेस नहीं मिला है, but technologically we got a lot of success. So if you don't mind putting that kind of a sum in technology, you need to also project about return on investment of sorts, right? तो ये चीज, how did you decide that ये इन्वेस्टमेंट करने से टेक्नोलॉजी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुरंत तो दे नहीं सकती. राइट. यू हैव टू बी इन्वेस्टेड. करेक्ट. यू हैव टू इन्वेस्ट मोर एंड देन द टाइम विल कम एंड रिजल्ट्स विल कम. बट वुड यू से दैट हमारी एज अ कंपनी वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, लिबर्टी, जो कहो कि वी हैव अ गुड रिजर्व्स एंड गुड एपेटाइट टू एब्जॉर्ब दिस कॉस्ट. And would you say that this cost investment has given you a lot of presence, lot of other intangible benefits? Yeah, always. आज 4 लाख डेटाबेस पूरा अगर ऑर्गेनाइज्ड है और उनका है कि जो लोग ऑलरेडी दिस बिजनेस में है, so I would say it is a fantastic. Technology will help to enable the processes. Right. Or to enable the smoothness so let's say of the process. At least elimination of some bottlenecks. Yes. And faster मिल जाता removing है. of result you are getting faster. Removal of all Decision manual errors. you can take faster. Correct. Errors of like manual errors that would arise would also reduce. That can be reduced. Correct. Accountability increases probably. Yes. And I would say it becomes very when you are digital, use of paper reduces. So all your audit trails are very clear. Everything is clean. Yes. So I think all of those things really add on to taking you to the next level. You can scale faster. Yes, we are also on that hope only we have started this doing this thing. We are also starting very soon. We already uploaded the app in the Google store. Yes. For B2C also. So now we will going to tap the customer directly. I have your app on my phone, and yes, I've also tried to apply for a loan just to understand how seamless it is. Yeah. And I would say you have leveraged the right APIs. You have leveraged your Sibyl APIs, your DigiLocker APIs, which is a vision. Yes. So I congratulate you for that. Thank you. Excellent. So on those lines, I would like to talk about one of the initiatives that you have taken, because you guys were so much early in the market with RuConnect app,
which was digitizing the loan process entirely. Now, at that point, even banks who have been giving loans for so many years had not fully automated it. So, what inspired you to start this and take this initiative as well? मैं बताना चाहूँगा कि रू कनेक्ट मॉडल इज मोर ऑफ अ B2B2C है. Right. मतलब हमारा जो धंधा है वो पूरा एग्रीगेशन का धंधा है. तो वी एग्रीगेट फ्रॉम द कनेक्टर्स. हमारी ऑफिस में फाइल ले आते, प्रोसेस करते हैं हमारी तरह, एंड देन वी सेंड इट टू द बैंक, राइट बैंक, कि भाई ये कौन बैंक कर पाएगा या कौन NBFC कर पाएगा. सो इन रू कनेक्ट वी हैव मेड थिंग्स पॉसिबल कि हमारा ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो जाए, ऑनबोर्डिंग बहुत ऑथेंटिक हो जाए, जहाँ पे KYC वेरिफिकेशन गवर्नमेंट की जो डिजी लॉकर है वहाँ से हमें पूरा मदद मिल जाए. So it's an integration direct. पूरा इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया हमने, और फिर रिकॉर्ड बनना चालू हो गया. आज हमारे पास कम से कम 4 लाख कनेक्टर्स के नाम है जो इस धंधे में है. Right. सब लोग हमारे साथ करते हो जरूरी नहीं है, बट there are 4 lakh people those who are in this business, and they are some or other way knows Ru loans. Correct. They are a part of your ecosystem. Yes, and they are almost every cities of India. Got it. So that is an advantage. और B2B2C हमने जो बनाया था, क्योंकि हमारा धंधा एग्रीगेशन का था, हमारा पूरा धंधा हमारे ब्रोकर्स, कनेक्टर्स, फ्रीलांसर्स, CAs, रियल एस्टेट एजेंट्स, म्यूचुअल फंड एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट, उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सो हम लोगों ने उन्हीं के लिए बनाया था कि उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इजी हो जाए, गवर्नमेंट और कंप्लायंसेस के हिसाब से भी वो कंप्लायंट रहे, तो वो इजीनेस आ जाए कि भाई ऑनबोर्डिंग हो गया और अभी आप इनके साथ धंधा कर सकते हो. ग्रेट. फिर वहाँ से हमने थोड़ा बहुत और ऐड करवाया कि जो बैंक जो NBFCs के पास API रेडी था, उनके साथ वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग. Right. कि आवर लोन्स गेट end-to-end disbursement. Means Basically, the information comes in and it goes to the bank directly. Yes, मतलब हमारे रू कनेक्ट ऐप पे इंफॉर्मेशन आएगा that we take it to the concerned banks और NBFCs पोर्टल. उधर हम लोग उधर छोड़ के फिर उधर से वो प्रोसेस चालू हो जाए. Understood. बट हमारा जो प्रोसेस है, हमने जो बनाया है, वो पूरा end-to-end है. मतलब अगर आपने अपना इंफॉर्मेशन डाला है, टिल डिसबर्समेंट तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उधर ही बैठ के everything is paperless, everything is completely पर्सनल लोन में automated. तो 10 से 15 दिन में आपका डिसबर्समेंट हो जाता है. Excellent. अभी हमें सक्सेस मिला है सिक्योर्ड में भी. सो पीरामल के साथ हमने जो पूरा इंटीग्रेशन किया, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंटीग्रेशन फॉर अस आल्सो. और मेरे ख्याल से वी आर द फर्स्ट वन दोज हु हैव स्टार्टेड इंटीग्रेशन विद पीरामल एंड डूइंग सिक्योर्ड बिजनेस एंड टू एंड. मतलब आज की तारीख में हमारे ब्रोकर या कनेक्टर को कहीं एक पैर बाहर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब ही कैन स्टार्ट फ्रॉम द ऑनबोर्डिंग करके, कस्टमर से बात करके, कस्टमर से डिटेल लेके पूरा ऑनबोर्डिंग करवा सकता है कस्टमर का ऑन आवर ऐप फॉर द लोन ऑनबोर्डिंग. वहाँ से ही अप्रूवल भी आ जाएगा उसको. और हमारा जो अप्रूवल है, जो पीरामल की सिस्टम है, उससे हमारा अप्रूवल भी 15 मिनट में आ जाता है. Right. और हमारे उधर तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पीरामल के उसमें एक वेंटाइल करके प्रोसेस है, जिसकी वजह से सिबिल भी हिट नहीं होता. मतलब सिबिल हमारा यूज़ होता है, वी हैव अ टाई अप विद सिबिल ऑल्सो. तो हमारा सिबिल यूज़ होता है एंड कस्टमर को पूरा स्कोर मिल जाता है कि उसके सिबिल का क्या हुआ, सिबिल क्या है. और वेंटाइल रिजेक्ट से सबसे बड़ा है कि हमारा जो सिबिल हीट होता है वो भी सॉफ्ट सिबिल हीट होता है. तो मतलब कस्टमर को सिबिल का इंक्वायरी कहीं नहीं दिखता, स्कोर का इम्पैक्ट भी नहीं आएगा और कस्टमर का कोई सिबिल दिखेगा भी नहीं. So let me stop you there. I think let me complete that. So from there, the customer will get a soft approval, and then if he uploads the documents and pay the login fees, he can get the sanction also. And from that sanction to disbursement, every process is digital. Super. So अभी हम लोग जो आगे करने वाले हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी 2-3 months लगेगा कि वो जैसे ही डिसबर्स हो जाए हमारे कनेक्टर को पैसा भी तुरंत मिल जाए. Excellent. So we are trying that full process of secured goes completely digital. हम लोगों ने अभी तक 3 महीने में मेरे ख्याल से 41 करोड़ डिसबर्स कर चुके हैं हम लोग.
Super. And this month we are targeting around 50 crores. So tell us more about Ru Loans and what kind of loans that you guys disburse. So in Ru Loans, we disburse all retail loans, personal loan, business loan, home loan, loan against property, working capital, car loan, used car loan, education loan, machinery loan, solar loan. So all type of retail loans we do majorly. Got it. Project loan and all we avoid. We have a opportunity to do it, and we did it for some projects, but that is not our core. Our core is a retail. Excellent. Now, in the recent past, on social media, etc., it's become very common to see a lot of people taking loans and people talking about how easy it is to get a loan. But in the real, like when somebody starts applying for the loan, it's actually not as simple as it seems. No. Loan application is simple. To get the loan is difficult. Right. Because in loan business, सबसे important है क्या? तो लोन तो सबको लेना है. Correct. मिलता किसको है? That is important. So ना ज़्यादा होती है इन लोन बिजनेस, हाँ कम होती है. Right. So अगर हमारे पास 100 एप्लीकेशन आती है तो एवरेज 30% लोगों को ही लोन मिल पाती है, 70% को बैंक रिजेक्ट कर देती है. Correct. Some or other reason, because that is not as per their policy, that is not as per that fitment, प्रोफाइल नहीं है, so उसकी वजह से they get rejected. Correct. So लोन किसको मिल सकती है? उसी को मिल सकती है जो क्रेडिट वर्दी है, जिनका सिबिल अच्छा है, बिकॉज आज तो सिबिल इज वेरी पावरफुल. तो जिनका सिबिल अच्छा है उनको मिल सकती है, जिनका रिकॉर्ड है, पास रिकॉर्ड है, पेमेंट रिकॉर्ड जिन्होंने ठीक ठाक बनाया है, उनको मिल सकती है. सो हम तो कस्टमर को बोलते भी है कि सर आपका रिकॉर्ड अच्छा बना के रखिए, ये पैसा आपको कभी भी काम लग सकता है. Got it. बट सर्टन लोग मजबूरी में कर लेते हैं बहुत कुछ, एंड देन दे बिकम ineligible for the loans. So it is always loan application is not that tough, but to get a loan is a tough task. Understood. So, Kaushik sir, in your case, you are linked and partnered with so many different banks and NBFCs. Yes, absolutely. So, when a loan applies, when somebody applies for whatever loan they are coming for, how do you help them decide that which is the best lending for them? So we have a very trained and strong back-end teams. So once somebody applies for the loan, so that team go through the documents of the concerned banks and NBFC, and then decide that as per his profile, that which bank this profile gets suited. Right. And accordingly we decide that which bank's rate is perfect for him. Right. And accordingly we suggest banks, rate, PF, everything should be seen that time. So for the selection of the exact bank, there must be a lot of knowledge base as well, right? with the Yes, team? knowledge base and a lot of training should go on. Correct. And even we have tried to make BRE in our RuConnect app, where our connector, our broker, our freelancer can check also that this file can go to in which bank. Wow. So Okay. through technology, they can at least decide that this file and this profile is fit for which bank. It's like a recommendation engine. Yes, it's like a recommendation engine, and also giving the details that which bank has a what rate. So somebody gives 4 lakhs rupees at 15%, but somebody gives 6 lakhs rupees at 18%. Right. So as per customer's requirement, we decide that sir आपको कितना चाहिए. So Got it. customer says I want 6 lakhs. So then you have to go for 18%, Correct. because the other bank is giving only 4 lakhs at 15%. Correct. So that type of decision we take accordingly the profile of the customers, his requirement. Suppose customer needs 6 lakhs and banks is giving 4 lakhs. So accordingly we have to decide that which bank he fits for. Right. And how do you form new partnerships with new banks and new NBFCs? It's very simple. They send us agreement. We go through the agreement and we agreed on the certain terms, and then we'll go on. Great. It's not that tough. And in today's day and age, with all the technology and the way you have evolved, how easy and how fast is it for you to launch in a new city? Oh, very easy. So how many days? नहीं, दिन में अगर मैं महीने में कम से कम 15-20 ब्रांच खुलती होगी. Wow. A day, every day, some or other branch is opening. Excellent.
So, as a young entrepreneur, what I take from here is take a lot of active risks and take a lot of just deal with things and go into it. You will learn on the go. Is that correct? So I always say to people that don't plan too much when taking initiatives. Plan properly, plan decisively, and then take decisions. So time will tell you that where you have to move on further. So I always say to people that let's start and let's process get evolved. You can't decide that what will happen in the future. That will the future course will decide for you that how to take it forward further when you are facing a problem. But I have seen a lot of people, and particularly those who are very learned people, they get into the lot of meticulous planning, and then the project will never take it up. Right. So we are a different company. We take the project faster and so, but ऐसा नहीं है कि हर project success होता है. Project get failed also, but we learned out of that project that why this got failed, and then we move on again. Excellent. So I would say that one should not afraid about failure of the projects, but and not doing too much planning. That doesn't give you the optimum result. So in our case also, if you know the name of the podcast, it's called Atomic Processes. Now, that's a very similar concept that we try to tell business owners as well, that break down your process into a lot of atomic parts. Atomic means small. And plan for small things, execute them faster, and then move on further. If you do smaller things well, you can take speed. You should give a time to project to evolve, because every project, आज आपने plan कर दिया XYZ, it doesn't mean that XYZ वैसे ही आपका project चलने वाला. Correct, correct. It takes its tolls. जहाँ जरूरत है वहाँ टोल देना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बैक फुट पे आना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, and then you have to play. Excellent. So But you can't say that मैं फ्रंट फुट पे ही खेलूंगा या बैक फुट पे ही खेलूंगा, and फिर आप कहीं नहीं खेल पाओगे. You will definitely get out. So what I understood well is take initiatives and iterate as you go. Don't plan too much in advance. Plan properly. Yeah. Project your losses properly. Yeah. That you might face losses. If Correct. you have that much money in your pocket, you should take it a bit. So it's more like a calculated risk that you are taking. Yes, instead of planning too much is not giving you a good result. This is what my theory. Maybe a lot of people have a lot of theories, so I can't say much about others, but I always take point like this way, that I start first, I understand, I learn, I take up my learning from other things, Yeah. and then put it here, and then take it the things forward. It's most important to start. It's most important to start and ready to evolve. Correct. And you should have in mind that इतना loss होगा. Loss लेने का Capacity. ताकत है तो go ahead. नहीं है तो करो ही मत. सही बात है. और आपने सोचा होगा 1 लाख रुपया लॉस होगा और होता है 5 लाख रुपया लॉस. सो यू शुड टेक दैट टाइप ऑफ पंट कि भाई कितना लॉस होगा और मुझे कितने लॉस पे बंद कर देना है कि नहीं अभी बस अभी मेरा हो गया. What is the level of risk that you have an appetite for? Because the problem with the people is that लॉस की कोई सीमा बांध के चलते नहीं है. Right. अभी हो जाएगा, दुनिया उम्मीद पे कायम है. Everybody is thinking that अभी ठीक हो जाएगा, and then there is endless. Loss is endless. Great. So I think so. Process is always evolve. You should take a punt accordingly and then move on. Us youngsters actually look up to our peers who are sitting in US, UK, etc. And we see that they get loans at 5%, 6%, etc. And in our case, if I apply for a loan, I'll see double figures at least. So what is the reason for that? यार वो लोग डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने सब कुछ पा लिया है. हम लोग अभी इमर्जिंग कंट्री है. आज भी हमें इमर्जिंग कंट्री बोला जाता है. आज भी अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो आपको क्या बोलते हैं? इमर्जिंग कंट्रीज बोलते हैं. तो इमर्जिंग कंट्रीज में जब तक सब कुछ नहीं हो जाएगा डेवलप, तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगी. आज भी इंडिया में डेब्ट रेशियो जो है, मतलब
पब्लिक से लेके अगर कितने लोगों ने लोन लिया, मतलब 100 लोगों में अगर आप देखोगे तो आज भी इंडिया में 30-35% लोगों ने लोन लिया है, जबकि अमेरिका में 100 लोगों में से 95% लोगों ने लोन पे ही जीते। राइट। सो ये फर्क है ना, मतलब जब 95% लोग लोन पे जीते तो बैंक को 1% भी मिलेगा तो उसका कितना पोर्टफोलियो पे क्या पैसा मिलेगा। करेक्ट। इंडिया में वही पैसा बनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। सो दैट मे बी द रीजन। ये मैंने अपना लॉजिक लगाया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। दैट यू नीड टू आस्क अ बैंकर, आई एम नॉट अ बैंकर। मैं तो खाली बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो मैं इसका जवाब अच्छी तरह नहीं दे पाऊंगा, कोई बैंकर अच्छे दे पाएगा। मैंने मेरा लॉजिक लगाया कि वो डेवलप कंट्रीज है, और डेवलप कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है कि एवरीबडी इज लिविंग इन द लोन्स। अंडरस्टूड, ग्रेट। इवन हम लोग दुबई में भी है, तो हमने देखा है दुबई में भी किसी का भी बैंक स्टेटमेंट भी आता है फॉर पर्सनल लोन, तो उसका ऑलरेडी 5-6 लोन चलता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी अभी हुआ है, एंड अभी अभी क्रेडिट बहुत स्मूथ हो गया है। राइट। किसी को भी क्रेडिट मिलना बहुत आसान हो गया है, सम और अदर वे क्रेडिट मिल जाता है, बट दिस इज नॉट द अर्लियर। वी कैन इवेंचुअली सी दैट दिस नंबर विल कीप ऑन ड्रॉपिंग। हो ही रहा है ना। अगर आप इसको 2008 में देखोगे तो यही पर्सनल लोन आपको 18-19% पे मिल रहा था। राइट। आज वही पर्सनल लोन आपको 10-10.5% से लेके 18% पे मिल रहा है। करेक्ट। सो अपॉर्चुनिटी है, मतलब जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिमांड वर्सेस सप्लाई इन अ वे। ऑब्वियसली। परफेक्ट, मेक सेंस। पहले 12-13% एफडी का रेट चल रहा था, आज 8% एफडी का रेट है। सो 18% भी एफडी का रेट देखा हुआ है हमने। वाओ। सो उसके सामने आज 8% है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ग्रेट, गुड टू नो। सो आई जस्ट इन अ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क कि आप जो न्यू जनरेशन है, आप जैसे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, या आपके जो दोस्त लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि आज का जो जनरेशन है ना, वो पैसा बहुत फास्ट कमाता है, या उसको पैसा बहुत आसानी से मिल जाता है, पर मैंने देखा है कि वो स्पॉइल हो रहा है। कि उसको जो इतना पैसा आसानी से मिल जा रहा है, जैसे हम ये एज के थे, आपके एज का, तो हमें शायद 5-10 हज़ार रुपया भी नहीं मिलता था। आज तो 1-1.5 लाख रुपया तो ऐसे ही मिल जाता है। तो आप लोगों को पैसे का वैल्यूज क्या है? आई वॉन्ट टू आस्क दिस जनरेशन, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है 1,000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे ही रेस कर लेते हैं, और उनको लगता है यार दिस इज वेरी, बहुत आसान है ये करना। तो व्हाट इज वैल्यू इन योर माइंड? और दूसरा मैंने एक और चीज देखा है कि आज का जो जनरेशन है ना, वो बिजनेस बिल्ड करता है बेचने के लिए। मतलब आज बिल्ड किया है, मैं कल बेच के निकल जाऊंगा। सो क्या वैल्यूज है आपको? मतलब जो चीज आप बनाते हो उसके लिए आपको कोई लव अफेक्शन है, नहीं है, या जस्ट उस पैसे में इंटरेस्ट है कि मैं बेच के निकल जाऊं? So this question from my side to all of your new generation friends. I'll try to answer on behalf of the entire generation, but I don't know if I'm right or wrong over here. At least this is what I experienced. But as you said, India is an emerging economy. But from where it was when you guys were growing and where it is today, the access to capital is so much more easier. Absolutely. So because access to capital is easy, we are seeing big stories also. Everywhere on social media, every day if I swipe up, I see this company raised so many, this company raised so many. So there's a lot of FOMO, which it's like, अगर raise नहीं किया तो क्या किया? So then we run behind capital and we run behind raising. But eventually what we have started realizing is the first time entrepreneur who is running behind raising, they figure that out and they crack it. But a lot of these people, once they have done it, they start falling in love after that. So first time entrepreneurs learn a lot of things in a fundamental way, but sometimes yes, the concept is that we want to sell the company, but once you start being an entrepreneur, it's an addictive thing. Then it becomes okay, now I want to really add value, I want to create more business, I want to generate something for a vision. So I say that the numbers have changed, but after a point entrepreneurs start behaving like a very similar manner, in my opinion. If that answers. One more question that जो आज की जनरेशन है, जो आपके दोस्त लोग भी आपको मिलते होंगे जो एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर, उनको फेलियर से डर नहीं लगता? फेलियर से डर लगता है, बट दे आर मच मोर ईजियर टू एक्सेप्ट फेलियर्स. सो बिकॉज
we see so many stories of failed entrepreneurs doing very well. Failure is now glorified. कि dropped out from college, वो जाके $1 billion कंपनी बना रहे हैं. That is और fine. I'm failed- saying failed on the suppose आपने कैपिटल ले लिया किसी का Right. और आपने फेल हो गए और पूरा पैसा डूब गया, आपका कॉन्शियस बाइट नहीं करता कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया. I mean, for me, definitely it does. But I would say that it's just so much easier to get access nowadays. So the failure, the way your generation or father's generation would think about failure was that if I fail, my life is over. We don't Yeah, have that such is- kind of risks anymore. Good. Thank you. Thank you so much for being with us. It was a pleasure. Thank you very much. In this podcast, we learned that how Mr. Kaushik Mehta believes in launching fast and iterating quickly. He also does not believe in planning too much into the future, puts a stop loss to all the initiatives, and does things really rapidly. From here on, we are going to be calling business owners who have a problem statement in their business. We are going to be solving that using technology and building an app for them, and then talking about that in the podcast itself. Comment below if you're an entrepreneur who has a process problem which can be solved using technology, and we'll invite you to the podcast.